Let's open this up. Shehzad Poonawalla, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Advocate Nikhil Jain, political analyst, supports the Congress. Harshvardhan Tripathi ji needs no introduction. Sheikh Owais, spokesperson of the National Conference. Tausif Shah, leader of the PDP. And we have the pleasure of Dr. John Dayal's company once again. Dr. John Dayal is a global peace activist, likes to call himself that. Let's put him on test once again. हर्षवर्धन जी, मैंने सोचा था आपसे शुरू करूं, लेकिन अब क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती है हमारे बीच, तो इनसे एक दो सवाल लेते हैं. आप भी जानते होंगे इनके बारे में, सब जानते हैं इनको. डॉक्टर जॉन दयाल, फारूक अब्दुल्ला is against the decision of the government of India in sending back Pakistani nationals. What do you make of this? I heard him carefully. He has not said what you are putting in his mouth. He has spoken and commented on only those persons who have been married here for decades or are very old. He has not said, don't send back everybody. He has not said that. You know, I think you like listening to people very carefully. Did you hear what the Pakistani Defense Minister Khwaja Asif said a couple of days ago, sir? So do something about him. You must do something, and the government must do something about it. No, the government will do. And about the terrorists. The government will do. The government is doing something about it. The Pakistanis and the ecosystem will be taught a lesson. But I am asking you, why is it so difficult for people like you to take a stand and call out Pakistan? It's a simple question. But you don't even know my position. Have I not denounced the terrorism? Have you denounced Pakistan for pushing terrorism? That's the question. Don't just denounce terror. Can you denounce Pakistan for pushing terror? More than once. Let's have it. More than Let's once. call out Pakistani terror. Say shame on Pakistan for 26/11 attack. Shame on Pakistan for Pahalgam. Say that. You have said it. You say that. Why should I repeat your words? Why can't you say that? I use my own words. Why can't you say that? The terrorists attacked with... Yeah, this is, you can't make me sing songs to your desire, no? I'm an adult. In fact, an old man. Are you? Have some common sense. I'll use my Dr. John words. Dayal, Why should I common use, sense, can common you use my sense, words? I'll tell you, sir, Why common sense dictates that all of us speak in one voice. Harshvardhan ji, ये शहजाद ने क्या चश्मा लगा? शहजाद, what is this? Actually, ये वोट बैंक का चश्मा है. हर्षवर्धन जी, प्लीज मिस्टर निखिल, आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू. दिस इज वोट बैंक का चश्मा. इस वोट बैंक के चश्मे में पता है आधा दिखता है. ह्यूमन राइट्स ऑफ दीज पाकिस्तानी इलीगल्स आर सीन, बट ह्यूमन राइट्स ऑफ द 26 फैमिलीज नॉट सीन, ऑफ कश्मीरी पंडित्स नॉट सीन, ऑफ दीपू देवी. यू नो हु दीपू देवी इज? दीपू देवी पासपोर्ट से भारतीय, दलित समाज से. उनको कभी भी वोटिंग का अधिकार नहीं मिला. जब 370 को लात मारा ना मोदी जी ने, तब जाकर मिला, पर ये उसके खिलाफ थे. पर हलीमा बेगम को राइट मिल जाना चाहिए. हालांकि 50 साल में हलीमा बेगम ने इंडियन सिटीजनशिप नहीं ली, पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया, पाकिस्तान का इलीगली रहते रही. ये ह्यूमन राइट्स वाले जो है ना, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स. अरे भाई, अटारी बॉर्डर पर उन्होंने बोला है कि पाकिस्तानीज नहीं चाहिए हमको हमारी. तो ये ह्यूमन राइट्स की जिसकी चिंता कर रहे हैं, पर पाकिस्तानी अपने नागरिकों की चिंता नहीं कर रहे. और मैं तो बोल रहा हूं कि मैं बड़ा कंफ्यूज हूं प्रणय जी. ये कल तक क्या बोल रहे थे जॉन दयाल एंड कंपनी कि भारत में मुसलमानों का जीना हराम हो चुका है. तो पाकिस्तान के मुसलमानों को पहली फुर्सत में भगाओ ना यहाँ से. क्यों उनको हराम की जिंदगी यहाँ पे दे रहे हो? अच्छी जिंदगी दो पाकिस्तान में. जहां से पाकिस्तान में उनको अच्छी जिंदगी मिल रही है, वहीं पर चले जाए. देखिए, 2.5 front वॉर है. One front is Pakistan, one is China, and the half front is the people who are sitting inside, who all party meeting में they'll say राष्ट्र नीति, and then they will do vote bank नीति.